Hello students, welcome back to the 8th class chapter of Swix Judiciary. Student, as you know, judiciary is the third organ of the government and its work is to sort out the disputes. And today we are going to take the subtopic provision of ensuring independent judiciary and importance of the judiciary. We will come to know what are the things which made the judiciary independent and why judiciary is important. Remember one thing that it is difficult to imagine a civilized state without an efficient judicial system. Now students see provision of the ensuring independent judiciary. The appointment of the judges and Chief Justice Supreme Court is decided in such a way that an efficient person may come. Second thing is the judges of the Supreme Court and High Court are given very high salary. Third is they are appointed for a very long time. Legal qualifications are prescribed for becoming the judges of the Supreme Court and High Court. The Supreme Court and the High Court India can declare a law passed by the legislature null and void if it violates the fundamental rights and provision of the Constitution. To maintain the dignity of the Indian judicial system, the judiciary in India is made to institute contempt of the court proceedings against the person who shows disrespect to the court. Now see what are the things which make the judiciary independent. First thing is that सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट ऐसी की जाती है कि केवल एफिशिएंट पर्सन ही आगे आ सके. Second thing, the judges of the Supreme Court and High Court are given very high salary. They are given very high salary so that they could not be bribed or they could not be corrupted. They are appointed for a very long time. So they are appointed for a very long time and legal qualifications are prescribed for becoming the judges of the Supreme Court and the High Court of India. Supreme Court and High Court of India can declare a law passed by the legislature null and void if it violates the fundamental. अगर कोई ऐसा बिल या कानून बनता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उनका हनन कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का हनन कर रहा है, तो वह उसको रोक सकता है या रद्द कर सकता है. टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए जुडिशरी इन इंडिया इज मेड टू इंस्टीट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट बनाया गया है कि जो भी कोर्ट के विरुद्ध या उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं करेगा उसके विरुद्ध जो है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के विरुद्ध उसकी कार्रवाई की जाएगी. Now let us see what is the importance of judiciary. Why judiciary is important? Judiciary is the third organ of the government and it protects the rights of the people also. ये लोगों के अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करता है. It interprets laws, settles disputes, protects the citizens' rights and delivers justice. ये झगड़ों को निपटाता है, सिटीजन्स के राइट्स की रक्षा करता है और जस्टिस देता है. इट सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो उसको सुलझाता है. इट रेंडर्स लीगल एडवाइस टू एग्जीक्यूटिव को लीगल एडवाइस भी देता है. इट क्रिएट्स न्यू लॉज एंड सेट प्रोसीजर्स. ये नए कानून को सेट करता है. इट इज़ द गार्डियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स का ये संरक्षक भी है, गार्डियन भी है. So in this way, we have seen that why judiciary is important. Thank you.